ले सकते हैं इजीली सिर्फ इसी फाइल्स को देखने के। इसके अलावा अगर आपको और कोई इंग्लिश से रिलेटेड और कोई जैसी फाइल्स वगैरह चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी मदद जरूर की जाएगी। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले है द वर्ड कोऑपरेटिव्स इन कोऑपरेटिव लर्निंग एम्फसाइजेस अनदर इम्पोर्टेंट डायमेंशंस लर्निंग्स। तो इसका राइट आंसर है कोऑपरेशंस कम्पिटिशंस। स्टूडेंट्स अगर आपको लगता है कि ये आंसर वैसे तो ये 100% ट्रू है आंसर, अगर आप फिर भी आपके माइंड में थोड़ा बहुत हो तो आप अपनी हैंड बुक आउट से सर्च कर सकते हैं इसके आंसर। तो वैसे ये बिल्कुल ठीक लगाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सजेस्ट टू लैंग्वेज लर्निंग्स ब्रोकन स्टॉवर्स। और नेक्स्ट है थोड़ा राइट है तो नजर नहीं आ रहा, इसका राइट आंसर है मॉडर्नाइज्ड एंड डिस्कशंस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द वर्ड्स कोऑपरेटिव्स इन कोऑपरेटिव लर्निंग्स emphasize another importance in first all seems to be develops in classrooms that learners blank rather than blank in learnings। तो इसका राइट आंसर है कॉपरेशंस एंड कम्पिटिशंस। पहले में कॉपरेशन आएगा और मुझे नेक्स्ट में आएगा कम्पिटिशंस कम्पिटिशंस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द कल्चरल लिटरेचर्स अट्रैक्टिव। सॉरी स्टूडेंट्स ये कुछ नजर नहीं आ रहा सही से, मैं आपको नेक्स्ट करवा देती हूँ। फाइल्स थोड़ी सी भरी हुई है ऐसे। नेक्स्ट है who pointed out that the traditions approach to developing syllables involves a large of subject matter। इसका राइट आंसर है 1998।
कहाँ से करें, तो कैसे क्यूजेस जो है वो खुद से देखें, एनो से सर्च करें तो उससे बेहतर आप ये सिर्फ एक क्यू देखें, आपने 10 आउट ऑफ 10 पास दें। Next is the entries is invested more than a set of very general blank that can be applied and interpreted in a variety of ways today. Principles. इसका right answer है principles. Next है non choice के rapid relaxing is prime positions in the following theories. इसका right answer है minimalist linguistic theory. Negative rules of the similar communication task. Sequences by learners may see on different paper is card. Difference is not the right answer of every task in repetitions. Next episode of following is true for neurolinguistic programming. कौन सा जो है वो neurolinguistic programming से related जो है हमारा आंसर true है। तो ये है it is a language of teaching method. It's a theory-based between is completed of blank stages. तो इसका right answer है three stages. Next देख लेते हैं. Which of the following theories recognize that teacher is a head? Next, which of the following factors suggest language learning boggles down into and immediately meaningful chunks? तो इसका आंसर है modularized instructions. Next देख लेते हैं. Next है which applying approaches or methods a teacher has to consider carefully in the blanks in which teaching and learning occurs. तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो है context. तो नेक्स्ट इसका है a good blank is someone who is able to influence others with his or her words. तो इसका राइट आंसर है स्पीकर. नेक्स्ट क्यूज देख लेते हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पेडागोजिस्ट treats लैंग्वेज एज a discourses. तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लर्नर सेंटर्ड. अगर ये आपको फाइल्स पीडीएफ में चाहिए हो तो वो भी आपको मिल सकती है. इसके लिए आपको मुझे कमेंट में बताना होगा कि आपको कौन सी फाइल चाहिए. आपको 501 से लेकर 518 तक की सारी फाइल्स, मिड टर्म्स की फाइल्स, क्यूज 1 2 3 सब कुछ मिल सकता है. जस्ट आप कमेंट्स करें. नेक्स्ट है हाउ मैनी वर्ड्स फैमिलीज आर रिक्वायर्ड टू डील विद द मोस्ट स्पोकन टेक्स्ट. तो हमारे पास ये 6000 to 7000. Next, which of the following multiple intelligences activities does the following represents? तो इसका राइट आंसर है pedagogy that appeals to all the
Chances speaks the whole persons in ways that more uninfected approaches do not. तो इसका राइट आंसर है ऑल साइजेस फिट वन. नेक्स्ट है L2 vocabulary learning areas are blank unlike L1 vocabulary learning. Yes, slow and uneven. Next, when applying approaches or methods, a teacher has to consider carefully the blanks in which teaching and learning course occurs. तो डिफरेंट इसका राइट आंसर है context. Next है text characteristics vary according to the different text blank with which the orator is familiar. तो इसका राइट आंसर है टाइप्स. Next, to provide opportunities to naturalistics second language acquisitions through the use of interactive skills in the group is a call of which of the following teaching methods. इसका राइट आंसर है cooperative language learning. Next, to early applications of our task-based approaches within the communicative frameworks of our language teachings were the blank and the Bangalore's projects. तो dear friends, इसका राइट आंसर है नैरो लिंग्विस्टिक्स प्रोग्रामिंग या फिर मलेशियन कम्युनिकेशनल लेवल्स. तो इसका है मलेशियन कम्युनिकेशनल लेवल्स. Next है who have the greatest influence on the quality and quantity of vocabulary learned by EFL learners with a reference to the Whoffer's hypothesis. तो इसका राइट आंसर है टीचर्स. Next are the concepts of bilingualism is interpreters blanks in the field of SLS psychology and education. तो इसका राइट आंसर है differently. Next, a method of language education that combines various approaches and methodologies depending on the aims of the lessons and the abilities of the learners is called blank approach. तो इसका राइट आंसर है eclectic. Next है the learning pronunciations definitely shows incorporations and advanced. इसका राइट आंसर है टेक्नोलॉजी. Next, which are the following characteristics regarding intelligence differences multiple intelligence models fundamentals testing models. तो इसका राइट आंसर है कल्चरल फ्री. नेक्स्ट है spoken language is blank similar in the written language. तो इसका राइट आंसर होगा सिस्टमेटिकली सिंटैक्टिकली. ये देख लेना, आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये ऊपर सिस्टमेटिकली है नीचे सिंटैक्टिकली है. तो राइट आंसर है इसका सिंटैक्टिकली.
Next, which of the following approaches has required teachers abandons the idea that teachers know or concentrates incentives on the idea of the learners discover. तो इसका राइट आंसर है लेक्सिकल अप्रोच. नेक्स्ट है लर्निंग्स or the constructors the dash scale and ये थोड़ा नज़र नहीं आ रहा, सॉरी डियर फ्रेंड्स. कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्रीनशॉट सही ले लिया जाता है और कभी कभी जो है ना वो ऐसे वो इनको कर देते हैं कि स्क्रीनशॉट ना ले सके. नेक्स्ट है नीड एनालिसिस सर्विसेज एज अ बेसिक्स फॉर इन्फॉर्म्स curriculum practices in blanks instructional designs. तो इसका राइट आंसर है ESP. Next, advocates of which of the following methods draw heavily on the theoretical works developmental, psychological, scene and Majowski. तो इसका राइट आंसर है कंपैरेटिव लैंग्वेज लर्निंग, कोऑपरेटिव लैंग्वेज लर्निंग, सॉरी. Right answer, it is a type of foreign language instructions in which the regular school's curriculum is taught through the medium of foreign language. इसका right answer है immersion education. Next, it is an activity or goals that is carried out using language such as finding solutions to a puzzle, reading a map and giving directions or making telephone call. तो इसका राइट आंसर है टास्क. नेक्स्ट है स्पोकन लैंग्वेज इज प्लेइंग सिंपलर देन रिटन लैंग्वेज. तो ये वाला जो है कि ये रिपीट हो गया, ये पीछे भी आपने पढ़ा था. तो इसका राइट आंसर है सिंटैक्टिकली. सिंटैक्टिकली इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स अप्रोचेस लीडर्स a specific set of perceptions and techniques to be used in teaching a language. तो इसका राइट आंसर है काउंसलिंग लर्निंग मेथड. नेक्स्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंस मेथड इज अ ब्लैंक मेथड. ये कौन सा मेथड है? तो इसका जी राइट आंसर है लर्नर बेस्ड. डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है क्योंकि इसकी अगर फिर भी कोई मिस्टेक वगैरह हो जाए तो आई एम सॉरी. और आंसर इसके बिल्कुल ठीक हैं. अगर आपके लिए ये बेस्ट रही तो काइंडली कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रही. इसमें से आपको क्यूजेस भी हैं, बताना फिर कितने क्यूजेस आते हैं. नेक्स्ट है वाई टीचिंग्स वोकैबुलरी द टीचर्स एंड अवॉइड्स टीचिंग ऑल द रिलेटेड इज. इसका राइट आंसर है फोनेटिक एंड फोनोलॉजी. नेक्स्ट है हु क्लासिफाइड L1
learning comprehension difficulties into external medium and internal factors. तो इसका राइट आंसर है सिमुलेट्स या कुछ ऐसे लिखा है, इसको सर्च कर लेना प्लीज़। SAMU सिमुलेट शायद 1984 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, Approach notes that by 1986 any refugees in the United States who wished to receive federal assistance had to be enrolled in which of the following programs। तो इसका राइट आंसर है competency based। Next, according to Green 1986, the language that is used at a certain moments is the blank language। तो इसका राइट आंसर है selected language। नेक्स्ट है BAE स्टैंड फॉर। BA स्टैंड जो है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है bilingual interactive activations। नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग अर्ली मेथड्स viewed grammar as a central component of language। तो इसका राइट आंसर है ऑडियो लिंगुअल मेथड। Next, which of the following approach requires teachers to abandon the idea of the teachers as knowers and concentrates instead on the idea of the learners as discover। तो इसका राइट आंसर है नैरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। नो, इसका राइट आंसर लेक्सिकल अप्रोच। Next, how many presuppositions were present by Reynolds and Thomas 1997 that guide the applications of NLP in language learning and other fields। तो इसका राइट आंसर है 13। The method which is commonly used in Pakistan bilingual context is। तो इसका राइट आंसर है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। Next है central to an approach or an method's language teaching is a view of the natures of language and the shapes blank hole। तो इसका राइट आंसर है teaching। Next, the acquisitions learning hypothesis claims that there are blank distinctive ways of developing competence in a second or foreign language। इसका राइट आंसर है ट्रू। Next, which of the following may be the interact activities for vocabulary learning। तो इसका राइट आंसर है एक्सटेंसिव रीडिंग्स एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वन गोल ऑफ कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शंस इज फॉर लर्नर्स टू बिकम एफिशिएंट
राइट आंसर इज एफिशिएंट, इनफिशिएंट या डिपेंडेंट या ऑटोनमस। तो इसका राइट आंसर है ऑटोनमस। नेक्स्ट है VOLL स्टैंड फॉर। इसका जो है वो क्या मतलब है, तो इसका मतलब है वोकेशनली ओरिएंटेड लैंग्वेज लर्निंग। रिपीट अगेन प्रोनाउंसिएशंस, वोकेशनली ओरिएंटेड लैंग्वेज लर्निंग। नेक्स्ट है L2 vocabulary learning spheres are blank unlike L1 vocabulary learning। तो इसका राइट आंसर होगा स्लो एंड अनइवन। ये पहले भी किया तो ये रिपीट हो गया दोबारा। नेक्स्ट है, इट इज़ एन अप्रोच बेस्ड ऑन द यूज ऑफ टास्क एज अ core unit of plannings and instructions in language teaching। तो इसका राइट आंसर है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। नेक्स्ट है कि 4 key principles at the heart of narrow linguistic programs according to the O'Connors and McDermott's, the two of which are reports and। तो इसका राइट आंसर है सेंसरी एक्चुटी। नेक्स्ट है नेशन 2001 urges that blank knowledge affects students language skill performance। तो इसका राइट आंसर है vocabulary। नेक्स्ट है classrooms procedures typically involve the use of activities that draw students' attentions to lexical collections and seeks to enhance their blank and use of collections। तो डिफरेंस इसका जो राइट आंसर है वो है रिटेंशंस। नेक्स्ट है Williams notes that the Poplar's computer analysis of text indicate that the blank most frequent words of English accounts for around 70% of all English texts। तो डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 7700। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नटल्स blank is commonly offered course in many seconds and foreign language curricula for different age groups, yet it is not a skill easily acquired by students। तो डियर फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है रीडिंग। नेक्स्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस मेथड इज़ अ ब्लैंक मेथड। जो इंटेलिजेंस का मेथड जो है उसको हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं लिनियर बेस्ड। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है लिनियर सेंटर्स pedagogists drew heavily from Chomsky's formal linguistics, Halliday's functional linguistics, Hammond's social linguistics and Austrian's blank theory। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास स्पीच एक्ट।
नेक्स्ट है द मेथड विच इज़ कॉमनली यूज इन पाकिस्तानी बाइलिंगुअल कंटेक्स्ट इज़, इसका राइट आंसर है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अर्ली वर्जन्स ऑफ द SLP यानी कि स्टूडेंट्स विद अ लिमिटेड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रोग्राम्स वर लार्जली ब्लैंक बेस्ड। तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ग्रामर। नेक्स्ट है उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी टाइप इन कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शंस क्लासरूम। तो इसका राइट आंसर है स्पीच एक्ट। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज़ अ कम्प्लेक्स ब्लेंड ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है इंट्रैक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं दीज टास्क इन्वॉल्व्स लर्नर्स combining different pieces of information to form a whole। डिफरेंट इसका राइट आंसर है लिग्सॉ टास्क। और ये हमारा क्यूज 513 क्यूज 2 का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। इट इज़ एन अप्रोच बेस्ड ऑन द यूज ऑफ टास्क एज द कोर यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्शंस इन लैंग्वेज टीचिंग। तो इसका राइट आंसर है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। डियर फ्रेंड्स, ये हमारे क्विज़ 2 जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो ये टोटल 74 है। इसमें से अगर आप अच्छे से कर लें तैयार 74 में इसमें से 10 तो पक्के आ ही जाएंगे। तो आपकी इसका मतलब प्रोफिशिएंसी कंफर्म है। तो इसके अलावा मैं आपके साथ फिर 513 का जो क्विज़ नंबर 3 है वो भी शेयर कर देती हूँ एक ही वीडियो में सारे क्विज़। तो फिर आपको ईज़िली आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो मैं वो भी कर देती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो है वो 513 के क्यूज़ नंबर 3 है। तो मैंने कहा इसको भी इसके साथ ही बना देती हूँ ताकि आप फिर आसानी से एक ही वीडियो में सारी क्यूज़ देख लें। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। द एफिशिएंट वर्किंग लेवल ऑफ टीचिंग्स इन इंश्योर्स बाय सिस्टमेटिक्स एंड केयरफुली प्लानिंग। इसका राइट आंसर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जो द मेन फंक्शन जो है ऑफ EIL एज अ लिंगुआ फ्रैंका इज ओरल। कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है it is a prerequisite for the development of communicative competence of lingua franca learners to engage meaningfully with authentic lingua franca। तो इसका राइट आंसर है टेक्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम the situations in which learners are working without the direct control of the teacher is called क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है
सेल्फ इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इसके बाद से आता है टोटल ग्लोबल इंटरनेट यूसेज ऑफ इंग्लिश वाज ब्लैंक एज पर 2010 रिसर्च फाइंडिंग्स। तो इसका राइट आंसर है 27.3%। नेक्स्ट है इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विद अ मल्टीपल नॉर्म्स एंड डाइवर्स। स्ट्रक्चर्स है, इवेंट्स है, वेरिएशंस है। इसका राइट आंसर है सिस्टम्स। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी इज नॉट अ ब्लैंक स्टेट अचीव्ड बाय ह्यूमन्स। तो इसका राइट आंसर है स्टडी। Next, which the following teaching resources correlates with the teacher's philosophy of education? तो इसका राइट आंसर है लेसन प्लान। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। The learners of English as a lingua franca needs primarily to develop their blank effectively with the non-native speakers of English। तो इसका राइट आंसर है ability to interact। Ability to interact is right answer। Next है in Pakistani education systems large classes can be hurdles in learners। तो इसका राइट आंसर है ऑटोनॉमी। नेक्स्ट है कार्ल प्रोवाइड्स अ रिच ब्लैंक एनवायरनमेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो इसका राइट आंसर है लिंग्विस्टिक्स। तो आपने पढ़ा काल, तो काल की जो एब्रीविएशन है वो भी आ सकती है। तो इसकी एब्रीविएशन है, काल की एब्रीविएशन है कंप्यूटर असिस्टेंट लैंग्वेज लर्निंग। इसकी एब्रीविएशन डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन मैंने आपको ये बताई है इसकी एब्रीविएशन ये भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज डायरेक्टली इन्वॉल्व द टारगेट लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर है डायरेक्ट स्ट्रेटजीज। जो उन्होंने कहा डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है वो होती है हमारी डायरेक्ट स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट है ICT स्टैंड फॉर। ICT स्टैंड फॉर मतलब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है Informations and Communications Technology। ICT stands for Informations and Communications Technology। नेक्स्ट देख लेते हैं। In teaching English as an international language become an essential tool of global interactions and global literacy। तो इसका राइट आंसर है डिजिटल मीडिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज डायरेक्टली इन्वॉल्व द टारगेट लैंग्वेज। तो ये देख लें, ये रिपीट हो गया, पहले भी पढ़ा था। डायरेक्ट इन्वॉल्व थे, तो इसमें कौन सी स्ट्रेटजीज है?
डायरेक्ट स्ट्रेटजीज। आई होप को आपको समझ आ रही होगी, तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखना, आपके प्रोविजंस 100% श्योर है बहुत अच्छे से होगी। नेक्स्ट है एट द बिगनिंग्स ब्लैंक यूनिट्स इंक्रीज टीचर नॉलेज विद कंपिटेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इसका राइट आंसर है वेल प्लान्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं हम द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ अ लेसन। एस्पेक्ट्स ऑफ लेसन प्लान्स आर ऑब्जेक्टिव ब्लैंक्स एंड सीक्वेंसेस। तो इस ब्लैंक में हमारे पास क्या आएगा, जो राइट आंसर है वो है कंटेंट्स। नेक्स्ट ले लेते हैं द मटेरियल्स डेवलप्ड फॉर लर्नर्स ऑफ EIL नीड टू बी सब्सटेंटली ब्लैंक फॉर्म्स द मटेरियल्स ट्रेडिशनली यूज्ड टू टीच EFL। इसका आंसर है डिफरेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम The lessons can be planned with different blanks, but some aspects are commonly found in most lesson planning. तो इसका राइट आंसर है फॉर्मेट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं डिजिटल मीडिया ऑफर अ नंबर ऑफ वेज टू enhance material development and learners blank across the traditional skills। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास फीडबैक। तो नेक्स्ट क्यूज पे चलते हैं। ये हमारा 513 का जो क्यूज 3 था उसका ये लास्ट क्यूज था। इस बाकी क्यूज नंबर 4 है, कुछ मैंने कहा वो भी साथ ही शेयर कर दूँ। तो ये मैंने थोड़े से वेबसाइट से सर्च किए हैं, तो ये मुझे नज़र आए, सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो है फर्स्ट द लर्नर्स ऑफ इंग्लिश एज लिंग्वा फ्रिका नीड्स प्राइमरली टू डेवलप देयर ब्लैंक इफेक्टिवली विद द नॉन नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एबिलिटी टू इंटरेक्ट। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। द नेक्स्ट है द टोटल ग्लोबल इंटरेक्ट्स यूसेज ऑफ इंग्लिश was blank as per 2010 research findings। तो इसका राइट आंसर है 37.3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एट द बिगनिंग्स ब्लैंक यूनिट इंक्रीज टीचर्स नॉलेज विद द कंपिटेंस एंड अंडरस्टैंडिंग्स। तो इसका राइट आंसर है एजुकेशंस। फ्रेंड्स ये बजाय कि आप सर्च करें कहीं उधर से कहीं उधर से क्यूज़, तो इसलिए सारी वीडियो में कंबाइन ही सारी क्यूज़ेस जो हैं वो कर दिए हैं, ताकि आप एक ही क्यूज़ेस को खोलें और उसमें से सारे आपको क्यूज़ेस के जो आंसर मिल जाए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज डायरेक्ट इन्वॉल्व इन द ट्राकिल लैंग्वेज। तो इसमें है सोशल स्ट्रेटजीज। ये दोनों कन्फ्यूज़ है क्योंकि जो हम पहले पढ़ के आए थे उसमें उन्होंने डायरेक्ट स्ट्रेटजीज कहा था, तो काइंडली ये आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम द मटीरियल डिवेल्प्स फॉर अ लर्नर ऑफ EIL नीड्स टू बी सब्सिटेंटली ब्लैंक फॉर मटीरियल्स ट्रेडिशनली यूज्ड टू टीच EFL। तो इसका राइट आंसर है डिफरेंट। नेक्स्ट है ICT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये देखा आपने, ये डिवाइस हो गया। ये क्यूज नंबर 3 में भी आया हुआ था, इसलिए अगर आप थ्योरी को अच्छे से कर लें तो 4 में आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं इन टीचिंग इंग्लिश एज इंटरनेशनल लैंग्वेज बिकम अ एसेंशियल टूल ऑफ ग्लोबल इंटरेक्शंस एंड ग्लोबल लिटरेसी। तो इसका राइट आंसर है डिजिटल मीडिया। नेक्स्ट है कार प्रोवाइड्स अ रिच ब्लैंक इन्वायरमेंट्स फॉर अ लैंग्वेज लर्निंग। तो कार जो है वो कौन सा प्रोवाइड्स करता है इन्वायरमेंट, तो ये है सोशल।
नेक्स्ट है दी सिचुएशंस इन विच लर्नर्स आर वर्किंग विदाउट द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द टीचर इज कार। तो ये होगा सेल्फ एक्सेस। नेक्स्ट एंड पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम्स लार्ज क्लासेस कैन द हर्डल्स इन लर्नर एंजाइटी। फ्रेंड ये कुछ इस तरह से क्यूजेस हैं, उनको अलग से जो है वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिए गए हैं, तो ये भी एक दफ़ा देख लेते हैं। फर्स्ट असेसमेंट इन ब्लैंक इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। इसका राइट आंसर है लैंग्वेज टीचिंग। नेक्स्ट है वन टर्म इज़ यूज इंस्टेड ऑफ टीचर एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर है ट्रेनिंग। नेक्स्ट है which of the following is community based teacher education also challenges teachers candidates assumptions about the issue of gender, race and multicultural diversity। तो इसका राइट आंसर है इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू न्यूटल के अकॉर्डिंग इज अ commonly offers in many second and a foreign language curricula for different age groups, yet it is not a skill easily required by the learner। तो राइट आंसर है इसका रीडिंग। नेक्स्ट है रीडिंग एज अ प्रोसेस इन विच द रीडर हैज़ टू गो थ्रू द टेक्स्ट इन अ मोर लीनियर फंक्शंस स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट यूनिट इन प्रिंट। तो इसका राइट आंसर है बॉटम अप। नेक्स्ट है SRL स्टैंड फॉर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। नेक्स्ट है Wells appeals to quantitative analysis CA as a way to locate areas of difficulty। नेक्स्ट है a good speaker जो है वो blank है, is someone who is able to influence others with his or her words। नेक्स्ट है थ्योरी बेस्ड लिसनिंग हैज़ 3 स्टेजेस। ये पीछे जो आपने क्यूजेस किए उसमें भी आया था। नेक्स्ट है कॉलम्स कैन बी अ गुड सोर्स फॉर जनरेटिंग मीनिंगफुल डिस्कशंस इन द क्लास। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव व्यूइंग इज लाइक एक्सटेंसिव रीडिंग्स दैट promotes repeated exposures to lexical items and exploits contextual cues available to the viewers। नेक्स्ट है देयर आर सम प्रोफिशेंसी जो है वो इसमें आएगा ब्लैक है। टेस्ट सच है जैसे कि IELT TS TOEFL टीचिंग ऑफ इंग्लिश फॉर लैंग्वेज विच पाकिस्तानी स्टूडेंट्स नीड्स टू क्वालिफाइज फॉर एडमिशंस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। तो नेक्स्ट है विच मेथड इज़ वाइडली यूज इन पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्कूल। कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है? वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। नेक्स्ट है IELTS स्टैंड फॉर इंटेंसिव लैंग्वेज कोर्स। नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ IELTS एट फ्री यूनिवर्सिटी ऑफ वेलैंड कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस मॉड्यूल्स। नेक्स्ट है द की असम्पशंस ऑफ टास्क बेस्ड इंस्ट्रक्शंस आर समराइज्ड बाय फीस। नेक्स्ट है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग proposes the notion of task as a central unit of planning and teaching जो है वो is a right answer। नेक्स्ट है Long and Crooks claim that tasks provides a vehicles for the prestations of। तो right answer है appropriate target language। नेक्स्ट है which are the following approach developed by the Rivers 1981। तो इसका राइट आंसर है एलेक्टिक्स अप्रोच। आगे है विच इफ द फॉलोइंग इज लैंग्वेज डिपेंडेंट बिकॉज इट कंटेन्स अबाउट ग्रामर फॉर्मूलेटर। नेक्स्ट है विच सॉफ्टवेयर कैन इंक्रीज द स्पीच रेट। तो इसका राइट आंसर है ऑडियोस्टी। नेक्स्ट है द टर्म इवैल्यूएशंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड्स वैल्यू विच रेफर्स करता है द यूजफुल ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है ICT स्टैंड फॉर।
तो ICT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है Jharkhand's 2000 and Raj 2005 do not completely agree on the details of the lingua franca core. Next है 8000 to 9000 vocabulary size was found too needed for adequate comprehension of newspaper text. नेक्स्ट है इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ न्यूज़पेपर कॉलम्स। न्यूज़पेपर कॉलम जो है वो ब्लैंक है, तो वही राइट आंसर है। टू डिज़ाइन अ क्लासरूम एक्टिविटी इन्वॉल्विंग ऑल 4 लैंग्वेज स्किल्स एंड एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड कम्युनिकेटिव चैलेंजेस। नेक्स्ट है लैंग्वेज सेकेंड लर्निंग रेट्स आर 27.3 अनलाइक एल1 वोकेबलरी जो है वो लर्निंग, तो 27.3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है BIA स्टैंड फॉर, तो इसका मतलब है बाइलिंगुअल इंटरेक्टिव एक्टिवेशंस। नेक्स्ट है रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ इन विच चिल्ड्रन इंगेज इन अंडर द ऑक्यूपेसिस ऑफ द स्कूल, तो राइट आंसर है इसका करिकुलम। नेक्स्ट है रेफर्स टू इन सिचुएशंस इन विच लर्नर्स आर वर्किंग विदाउट द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द टीचर, तो इसका राइट आंसर है सेल्फ इंस्ट्रक्शन। आगे है टीचर एजुकेशन करिकुला कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 4 मेजर एरियाज, तो इसका राइट आंसर है 2, 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्लासिफाइज एल1 लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन डिफिकल्टीज इनटू एक्सटर्नल मीडियम एंड इंटरनल फैक्टर्स, तो इसका राइट आंसर है सिम्बल्स 1984। फ्रेंड्स ये वही क्यूज़ है जो पीछे हमने क्यूज़ में किया था, क्यूज़ नंबर 3 में, तो इसका जो राइट आंसर था वो सही नज़र नहीं आ रहा था, तो ये सही नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है ब्लैंक बिलीव्स इंग्लिश टीचर्स शुड बी ट्रेड टू कंस्ट्रक्ट एंड मार्क स्टूडेंट्स पेपर्स बिकॉज असेसिंग स्टूडेंट्स पेपर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग द टीचर्स, तो इसका राइट आंसर है विलियम्स 1998। नेक्स्ट है द लर्निंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन शुड आल्सो इनकॉर्पोरेट एडवांस, तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट है प्लेइंग प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक सजेस्टेड अ नंबर ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट लैंग्वेज लर्निंग, तो इसका राइट आंसर है डिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट है एक ख़त्म हो गया, फ्रेंड ये क्यूज़ 2 के जो हैं वो कुछ और भी क्यूज़ हैं वो भी मैं साथ करवा देती हूँ आपको। तो इसमें है लैंग्वेज टीचिंग द टेक्नोलॉजीज इनोवेशंस विल इन्फ्लुएंस बोथ द कंटेंट एंड द फॉर्म ऑफ ब्लैंक्स डिलीवरी इन द फ्यूचर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंस्ट्रक्शनल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स 1986 द लैंग्वेज इज़ यूज एट अ सर्टन मोमेंट्स इज़ द ब्लैंक लैंग्वेज, तो इसका राइट आंसर है सिलेक्टेड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग इज प्राइमरीली मोटिवेटेड बाय द थ्योरी ऑफ, किसकी थ्योरी ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है द मेथड विच इज़ कॉमनली यूज इन पाकिस्तानी बाइलिंगुअल कंटेक्स्ट इज़, ये है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये भी रिपीट हो गया, पहले भी हमने किया था। तो नेक्स्ट है नीड एनालिसिस सर्विसेज एज अ बेसिक फॉर इन्फॉर्म्ड क्यूरिकुलम प्रैक्टिसेस इन ब्लैंक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, तो इसका राइट आंसर है ESP। नेक्स्ट है VOLL स्टैंड फॉर वोकेशनली ओरिएंटेड लैंग्वेज लर्निंग्स, ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है दीज टास्क इन्वॉल्व लर्नर्स कंबाइनिंग डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन टू फॉर्म अ होल, तो इसका राइट आंसर है जगसा टास्क।
नेक्स्ट है इन एनी लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस blank play a critical roles in shaping their instructions. Materials. Right answer. It is an approach based on the use of tasks as the core units of planning and instructions in language teaching. तो राइट आंसर है इसका टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग. Next, it as an approach to a second language teaching in which teaching is organized around the contents or informations that students will acquire rather than around the linguistics or the types of syllabus. तो right answer है content based instructions. Next है the teachers needs to be able to use approaches and methods on their own judgments and experience in a blank and creative way based. तो इसका right answer है flexible. Next है when applying approaches or methods, a teacher has to consider carefully the blank in which teaching and learning occurs. तो इसका right answer है context. Next है language processing is a complex blend of a wide range of factors. तो इसका right answer है interaction. Next, it is an activity or goal that is carried out using language, such as finding a solutions to a puzzle, reading a map, and giving directions or making a tenfold cards. So, इसका right answer है task. Next, according to scholars, the list of activities which are the following is not an activity types in content-based instructions classrooms. तो इसका right answer है speech act. ये हमने पहले भी किया था, repeat हो गया. Next है method of language education that combine various approaches and methodologies. This depending on the aims of the lesson and the ability of the learners is called approach. Elective approach. These are designed to practices or research those tasks that are found to be important in a needs analysis and turn out to be important and useful in the real world. तो इसका मतलब right answer है real world task. And next है early versions of the SLEP यानी students with a limited English proficiency programs were largely grammar based. ये हमने पहले भी किया था. नेक्स्ट है BIS stand for. तो इसका मतलब है bilingual interactive activations. Bilingual interactive activation. CLT is understood more than a set of very general blank that can be applied and interpreted in a variety of ways today. तो इसका right answer है principles. Next है one goal of content based instructions is for a learners to become autonomous. ये भी repeat हुआ है. Next है Nations 2001 asks that black knowledge affects students language skill performance. तो right answer इसका है vocabulary. Next है EVP instructions help students to perform well in blank higher education settings for English services as a medium of communication. तो इसका right answer है vocational. Next है the concepts of bilingualism is interpreted the blank in the field of SLA, psychology and education. So इसका right answer है differently. Next, it is a type of foreign language instructions in which the regular school curriculum is taught through the medium of the foreign language. तो इसका right answer immersion education. Next है current SLA research has revealed that blank factors affects success learning and L2. इसका right answer है socio-cultural. Next है the total global internet usage of English was blank as per 2010 research findings. तो इसका right answer है 27.3. ये भी repeat हुआ है. तो फ्रेंड्स देखें ऐसे बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आपको साथ साथ याद भी हो रहे हैं. देखिए ये इतनी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है तो प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिएगा. इससे हमारी हौसला अफजाई होती है कि आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आ रही है और हमें इस तरह का और मटेरियल जो है वो आपके लिए अपलोड करना है. नेक्स्ट है ICT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट है लर्नर्स कैन फॉलो डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ ऑटोनॉमी डिपेंडिंग ऑन द blank and communication demand of a particular task. तो इसका right answer है linguistics. तो next है teaching English as international language become an essential tool for global interactions and global literacy. तो digital media है.
तो कार प्रोवाइड्स अ रिच प्लेइंग इन्वायरमेंट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, तो इसका राइट आंसर है लिंग्विस्टिक्स। नेक्स्ट है इन पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम्स लार्ज क्लासेस कैन बी अ हर्डल्स इन लर्नर्स, तो इसका राइट आंसर है मोटिवेशन। नेक्स्ट है डिजिटल मीडिया ऑफर्स अ नंबर ऑफ वेज टू इनहेंस मटेरियल्स डेवलपमेंट्स एंड लर्नर ब्लैंक अक्रॉस द ट्रेडिशनल स्किल, तो इसका राइट आंसर है फीडबैक। Next, in which of the following types the language input is presented to the learners not piece by piece but in fairly large chunks, तो analytics labels। Next are the situations in which learners are working without the direct control of the teacher is called self instructions। Next है the syllabus that are usually determined in advance of teaching are referred as, तो इसका राइट आंसर है प्रायोरिटी सिलेबस। द मेन फंक्शन ऑफ EIL एज अ लिंगुआ फ्रैंका इज ओरल, तो इसका राइट आंसर है कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज इन विच चिल्ड्रन इंगेज अंडर द ऑक्यूपेशंस ऑफ द स्कूल करिकुलम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज डायरेक्टली इन्वॉल्व द टारगेट लैंग्वेज, तो इसमें डायरेक्ट स्ट्रेटजीज भी है लेकिन जो हमने पीछे पढ़ा था डायरेक्ट ही था। Autonomy is not a state achieved by learners study। Next, the syllabus is more a teaching organizer than a blank indicator learning indicator। The syllabus is a critical piece of planning between instructors and students that follows through designs। इसका right answer foundations। The material developed for learners here need to substantially form the materials traditionally used to teach EFL, तो इसका right answer different है। It is a Next है English is a language with multiple norms and diverse systems। तो फ्रेंड्स ये हमारे क्यूज़ जो हैं वो हो गए कंप्लीट। इसमें से 2, 3 और 4 जो है वो सारे क्विज़ कंबाइन करते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और इसमें कोई मिस्टेक वगैरह हो तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट कोई वीडियो की ज़रूरत हो कोई फ़ाइल की तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब्स it।